देवेंद्र, रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या खरीदारी करनी चाहिए अर्निंग्स से पहले, और दूसरी चीज अर्निंग्स को ध्यान में ही रखते हुए कुछ स्टॉक्स जो आप रेकमेंड करेंगे? मेरे ख्याल से जो रिफाइनिंग मार्जिन हम रिलायंस के अंदर इस क्वार्टर के अंदर देखते हैं तो काफ़ी हद तक आई थिंक एक अच्छा इम्प्रूवमेंट आपको इवन लास्ट क्वार्टर का जो रिफाइनिंग मार्जिन था उससे भी शायद ये क्वार्टर में बेटर रिफाइनिंग मार्जिन आ सकता है, बिकॉज many of the cracks I think would probably have slightly better, including diesel, I think would have slightly better realization in the margins. So from that perspective, I feel that Reliance could be, and always I think in the limelight it could be a good choice. At the same time, profit भी क्वार्टर के अंदर मैं समझता हूँ कि I think quite handsome profit would be recorded in this particular quarter. रिलायंस जियो का लॉन्च होने जा रहा है अगले महीने से, सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट सम अमाउंट ऑफ एक्साइटिंग टाइम. सो every fall or an opportunity during the fall would be welcome as far as adding the stock in the portfolio. Having stayed invested for long, I would think that the fall in the market would be the best opportunity to buy the stock further into the portfolio. बिल्कुल. चलिए देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. सजीव धवन इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं और कुणाल बोथरा भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं. शुक्रिया आप दोनों का इस बातचीत में शामिल होने के लिए. मॉर्निंग टू यू. सजीव, व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी फॉर मार्च, एंड लेट मी अपडेट यू, निफ्टी इस समय 7450 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं. ऑब्वियसली इट्स टिल्टिंग टुवर्ड्स द सेल साइड. मोर देन 30 स्टॉक्स आर इन रेड. बट आपका व्यू क्या है मार्केट पे इस समय सजीव? Morning. Well, we've had a very good bounce back considering the sharp sell-off that we saw over the last few months. It's natural that there will be some profit taking at the 7,500, 7,600 levels. The markets have also bounced back because the FIs have stopped selling and they've been buying, as we can obviously see as well. So it's very important for the markets that the global situation stays calm. The expectation from the US Fed is that they do not raise rates now, that they do that in June, and also that the RBI cuts rates by at least 25 basis points or 0.25% in April. If that all happens, you'll see the markets continue to move upwards, and if the markets do fall a little bit more, then I think for investors and traders again, it does show that if you've got a bit of patience, you can buy quality stocks on declines. You will be rewarded when the markets do calm down and recover again. जी सजीव, लेकिन 25 बेसिस पॉइंट का कट क्या आपको लगता है कि मार्केट में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, और अगर 25 बेसिस पॉइंट का कट आता है तो शायद उतना ट्रिगर मार्केट को ना दे, या फिर एक मार्केट्स को ड्राइव करने में जरूर हेल्प मिलेगी, 25 आए या फिर 50 बेसिस पॉइंट आए? Well, I think 25 basis points is expected now by the calm in the global situation, by the situation with inflation, and the fact that the country really needs some further growth, and a fall in interest rates by at least 0.25% will be a step in the right direction. As you said, if that does not happen, that will be treated as a negative and an excuse for short sellers to sell off, or wherever the markets are at that stage, for some more profit taking to happen. And if there is a cut of half a percentage points, then you will see the markets from, again, that stage where we are, move up by at least, I think, 1 to 2% in the frontline indices. So it's very important that there is some cut. If there's no cut or a small cut, then there may not be any positive reaction, and we'll just continue to move based on results which will come out next month, and the fund flows and the global situation, which at the moment is better, but still not totally free of uncertainty and some nervousness. बिल्कुल. इस बीच कुणाल बोथरा भी हमारे साथ जुड़े हैं. कुणाल, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए. कुणाल, फार्मा स्टॉक्स पर आपकी राय क्या है? कल भी हमने देखा जिस तरह का क्रैक हमने फार्मा स्टॉक्स में देखा, तो ऑब्वियसली लेड बाय पोस्टर बॉय कल के फॉल का ल्यूपिन, और फिर डॉक्टर रेड्डीज जिस तरह से क्रैक हुआ. फार्मा स्टॉक्स पर आपकी सलाह क्या है इस समय कुणाल? जी, अगर हम फार्मा स्पेस की बात करें ना, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि आई थिंक ये एक लार्जर पीरियड ऑफ करेक्शन है.
ये शायद इलोंगेटेड करेक्शन हो सकता है फार्मा स्टॉक्स में। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो सन फार्मा जब वो करेक्शन चालू हुआ ऑलमोस्ट 1.5 ईयर बैक, आई थिंक उसके बाद से एक डिसाइसिव अपट्रेंड अब तक शुरू नहीं हुआ है उस स्टॉक में, जब हम कह सकते हैं कि स्टॉक शायद अपने प्रीवियस हाई को भी टेस्ट करने आ जाए। एक सिमिलर सॉर्ट ऑफ पैटर्न मुझे ऐसा लगता है काफी सारे फार्मा स्टॉक्स में बन रहा है। तो नेम्स लाइक लुपिन, डॉक्टर रेड्डी, मिड कैप नेम्स एज वेल एज औरोबिंदो फार्मा पर्टिकुलरली, बिकॉज वो एक स्टॉक था जो काफी स्ट्रॉन्ग, काफी रोबस्ट था कुछ एक महीनों तक, और लास्ट कुछ एक हफ्तों में आई थिंक एक बहुत सीवियर करेक्शन आ चुका है स्टॉक में, और ऐसा लग रहा है कि स्टॉक शायद और स्पाइरलिंग डाउन ट्रेंड में आ सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए स्टॉक्स में, बिकॉज ये जो पैटर्न्स है ये सिर्फ लार्ज कैप या एक चुनिंदा स्टॉक्स में नहीं है, ये हम लार्ज कैप्स एज वेल एज मिड कैप फार्मा में सारे फार्मा स्टॉक्स में हम एक ऑलमोस्ट एक सिमिलर पैटर्न देख रहे हैं। जी।